सबको देना होगा ना, छोटा वाला उधर है ना, तो ये सब दीजिए ना, समझ गए। भूतो सुसुप्तो करुणामानवो जो जन्त शुद्ध भर ज्ञान लोचनो लोकस पाप पगे घाट को वन्दामि बुद्धं अहमादरेणकं बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। आज इस पावन वैशाख पूर्णिमा के दिन हम सभी महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित बोधि वृक्ष के नीचे एकत्रित हुए हैं। 2569वां बुद्ध जयंती मनाने को जो हर्षोल्लास से हम मनाते हैं और एक महत्वपूर्ण दिन है। ये आयोजन किया गया है हमारे महाबोधि मंदिर प्रबंधन सभा से। On the occasion of the 2569th Buddha Purnima, we have all assembled here under the sacred Bodhi tree in the premises of the Mahabodhi temple to celebrate the 2569th Buddha Purnima organized by the Bodhgaya Temple Management Committee. Our chief guest today is His Excellency the Governor of Bihar, Sri Arif Mohammed Khan. We have one of our senior monks from Thailand, the most venerable Somden, and our sponsors for this celebration, Upasika Thospo Banthen from Thailand. Besides this, we have all the officials from the Gaya District Administration, the Honorable Commissioner, the Honorable SSP, DM Gaya, who is also the chairman of the Bodhgaya Temple Management Committee, dignitaries and upasikas joining from all over the country. Commencing today's celebration, we will start by lighting the ceremonial lamp, and I would invite the Venerable Chief Monk of the Mahabodhi Vihara, Chalinda, to please lead the chief guest and Venerable Somdet and the sponsor and other dignitaries in lighting the ceremonial lamp. Excuse me. और लेगा क्या? आगे से देखते हैं।
administrative technique, the 5 precepts, the Panchashila. Venerable Bhikkhu Chalinda, the chief monk of the Mahabodhi temple, will lead the administration of the 5 precepts. हमको यही से करना है, आप छोड़ दीजिए।วิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิพันเตวิสุงราคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงราคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงราคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยามาชาปมาทฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะทังสีเลนะสุขังกุยันติสีเลนะบุญสัมปะสีเลนะบุญญาติตัสมาสีลาวิสุทธายะ สาธุ I would now request Dr. Tyagarajan SMIS, the District Magistrate Gaya, and Chairman of the Bodhgaya Temple Management Committee, to welcome this August gathering under the sacred Bodhi tree. I extend the heartfelt welcome to all present under the sacred shade of the Bodhi tree on this auspicious occasion of the 2569th Buddha Purnima. This sacred day marks the birth, enlightenment and Mahaparinirvana, the blessed one, Bhagavan Buddha. And it is a matter of deep honor for us to celebrate it at this World Heritage Site sanctified by His Supreme Awakening. I am deeply honored to welcome our Chief Guest, His Excellency, the Governor of Bihar, Shri Arif Muhammad Khan, whose gracious presence adds immense significance to this celebration. I also extend a warm welcome to Ms. Sirikon Tantiayate, Honorable Consul General of Thailand and Kolkata, whose participation reflects the deep spiritual and cultural ties shared by India and Thailand through the Dhamma. I also welcome Venerable Somdek Sangaraja of Thailand. I also welcome Upasika Paspon of Thailand, who is also the donor of this Buddha Jayanti. To all the honorable monks, respected guests, devotees and pilgrims from across India and around the world, your presence here is a living testimony to the universal message of peace, compassion and self-realization taught by Buddha. May this sacred gathering inspire us all to walk the path of wisdom, non-violence and harmony. The BTMC has taken various measures in the recent years to make the temple premises eco-friendly. We have totally made the premises solar electrified, and also the tons of flowers which used to be offered to Mahatma Buddha is now used to convert it to agarbatti, and it is being sold to various parts of the country in collaboration of IIT Kanpur. We are taking further measures to ensure both Gaya and the whole premises is eco-friendly. I once again thank every one of you for your presence today. Thanks a lot. I would now request our Chief Guest, Your Excellency, Sri Arif Muhammad Khan, His Excellency, the Governor of Bihar, along with the editorial board and the Honorable District Magistrate, to please release the annual journal Pragya 2025, a publication of the Bodhgaya Temple Management Committee.
Thank you so much, Your Excellency, for doing the honors. I would now invite Venerable Nawang Tenzin Gyatso, the President of the International Buddhist Council, Bodh Gaya, to please speak a few words signifying today's occasion briefly to this august gathering. Venerable Nawang Tenzin Gyatso. My salutation to all the Venerable Sangha members, His Excellency Governor of Bihar, Sri Arif Mohammad Khan, distinguished guests, and the Sangha members assembled here. As every year, we are here to commemorate 2569 Buddha Purnima. This is a day of great celebration. Our Lord Buddha attained supreme enlightenment on this day under the sacred Bodhi tree of Vaishnav Stham. Thus, this day has become a universal celebration day. From this day of 2569 years ago, the land of Urvela became sacred and Prince of Asia became universal movement for peace and compassion. It is and the teaching of Buddha with wisdom, loving kindness, and compassion straight to all over in the world. It is because of his teaching and wisdom that the world regards India as Aryabhumi, land of nobles, where divine knowledge and wisdom originated. Vesak is a day of immense importance to all the Buddhists, bringing all great traditions together to celebrate the Buddha's birth, enlightenment, and the great passing away of the Blessed One. 84,000 teachings of Lord Buddha from 2,569 years ago still live and resonate in the hearts and minds of millions and billions of followers worldwide with gratitude. On this day, my humble gratitude goes to Venerable Anna Gariga Govinda, Dhammapal, and Dr. Bhimrao Ambedkar, both as an apostle of peace and social justice, and His Holiness the Dalai Lama for promoting the vast teaching of Buddha for the benefit of all in this millennium. On behalf of International Buddhist Council, I would like to thank His Holiness the Dalai Lama for his joint project of establishing the Dalai Lama Center for Tibetan and Indian Ancient Wisdom Center here in Bulgaria. This center will benefit varying intellectuals and academic needs of holistic area of courses dedicated to the promotion of culture of the mind and the heart. The Indian wisdom and the knowledge that came from Nalanda was previously preserved by Tibetans for centuries are now back in its original place. The center program, the courses will bring together people from diverse backgrounds and enable them to research and contribute both individually and collectively. The program will offer participants and visitors an environment to learn and awaken human potential, solve problems, and heal. Lastly, on this great occasion, before I conclude my speech, I
will request the concerned authorities to solve Article 149 of Mahbudi Magia with wisdom and fairness for the good of the nation, for the harmony of the nation, for the security of the nation, for the peace for the world. Thank you very much. And may peace prevail and peace reign in our heart. Thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. I would now invite our sponsor, Upasika Tospon Vachiravan Pen, to very briefly convey the goodwill message on this special occasion.นมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จพระเทระยานมุนีและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการท่านผู้มีเกียรติทุกท่านข้าพเจ้าในฐานะอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาข้าพเจ้ามีความเชื่อในการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้พระอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคข้าพเจ้าเชื่อในกฎแห่งกรรมชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วข้าพเจ้าเชื่อในกฎของการเวียนว่ายตายเกิดตามกรรมที่สร้างไว้ข้าพเจ้าเชื่อในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องกฎพระไตรลักษณ์คือกฎปฏิจจสมุปบาทข้าพเจ้าเชื่อในคำสอนตามหลักวิปัสสนาภาวนาที่มีเป้าหมายสูงสุดคือการหมดสิ้นทุกข์อย่างถาวรเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยเพราะศรัทธาคือพาหนะอย่างเดียวที่นำพาชีวิตออกจากวัฏฏะสงสารอย่างสิ้นสงสัยเนื่องในวันวิสาขบูชานี้จึงให้เชิญชวนท่านทั้งหลายเจริญวิปัสสนาภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาแก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อแสดงกตัญญูกตเวทีร่วมกัน1 นาทีค่ะ I respectfully pay homage to ท่านเจ้าคุณสมเด็จ and all venerable monks, the governor and all distinguished guests. I have total faith in the enlightenment of the Lord of Buddha and the Four Noble Truths, including suffering, original of suffering, the cessation of suffering, and the path of the cessation of suffering. I also believe in the Karma, the law of the Karma, the law of the cause and the effect. I also believe in the 3 characters, the Tailak and Paticcasamuppada, or the law of dependent origination. I believe in the cycle of birth and death. I believe that practicing vipassana
is the only tool to end the suffering or nirvana as an ultimate result of Buddhism. I have unshakable faith in Triple Gems as a only vehicle to end the cycle of suffering and escape from the cycle of birth and death. As a sacred moment of Vesak, I would like to humbly invite you all to practice Vipassana meditation as a sincere tribute to the Lord of Buddha for 1 minute. Thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. A very brief message from our Sikh friends here from Ranchi, Harnam Singh Namdhari ji from the Namdhari Sangat India. Please be very brief. एक ओंकार श्री सद्गुरु राम सिंह जी सहाय आज इस पावन वृक्ष के नीचे सबसे पहले तो मैं नामधारी सिखों की ओर से बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस पूजनीय महाबोधि वृक्ष की छाया में अपनी वाणी रखने का अवसर दिया है। ये संदेश हमारे परम पूजनीय सद्गुरु दिलीप सिंह जी की ओर से है। इस पावन अवसर पर देश विदेश से आए पधारे सभी श्रद्धालुजन को सद्गुरु दिलीप सिंह जी की ओर से और हमारी संगत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम पिछले 4-5 वर्षों से इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। हमारे गुरु जी का स्पष्ट संदेश है कि सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू ये चारों धर्म जो एक ही भारतीय संस्कृति के अंग हैं, जिनकी उपज इसी भारत की पवित्र धरती पे हुई है, इन सब में एकता होनी चाहिए और इन चारों धर्मों के जुड़े लोगों को एक सूत्र में बांधने का ही कार्य हमारी नामधारी सिख संगत कर रही है। हम यहाँ इस मंच से ये कहने आए हैं कि हम नामधारी सिख भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वालों के साथी हैं। बिना बुद्ध धर्म के भारत की आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल पहचान अधूरी है। बुद्ध धर्म के कारण ही विश्व में भारत को सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पहचान उजागर हुई है। इसलिए हमारा संकल्प है कि एकता, सहयोग और सम्मान के साथ सभी आगे बढ़ें। इस वर्ष हमारे सद्गुरु जी के आदेश से गुरदासपुर जिला पंजाब में होली के अवसर पर होला मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे चारों भारतीय धर्मों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके एक ही मंच से एकता और सद्भावना का संदेश दिया गया, जो हमारी भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की जरूरत को और बल देता है। यदि इस प्रकार के आयोजन भारत में सभी जगह हो तो यह आपसी सहयोग, विकास और शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। पुनः सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। भगवान बुद्ध की जय, सद्गुरु राम सिंह जी की जय। Sadhu, sadhu, sadhu. I would now invite Your Excellency, the Governor of Bihar, Sri Arif Mohammad Khan, to please deliver your address on this special occasion to the august gathering. Okay. वेनिरेबल मॉन्क्स, हमारे बहुत ही श्रद्धेय सभी धर्म के Venerable Somdep Sangha of Thailand, President IBC Bodh Gaya, Venerable Gavan Tenzin Gyatso, Venerable Upasika, first form of Thailand, donor of Buddha Jayanti, Commissioner Mother Division, Dr. A.N. Safina,
District Magistrate and Chairman, Bodh Gaya Temple Management Committee, Shri Tyagarajan SMG, SSP Gaya, Shri Anand Kumar Ji, Secretary BTMC, Dr. Mahashweta Maharathi Ji, members of the Bodh Gaya Temple Management Committee, devotees, sabhi bhaktan, friends from across the world, सभी मित्र देवी और सज्जनों जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों और पूरी दुनिया से यहाँ पधारे हैं, मैं I consider it my good fortune and I can't thank my stars enough that in Parliament I have represented a constituency which included Shravasti, one of the most prominent village. Now it is becoming a town, which is prominently mentioned in all Buddhist documents. And again, it's my real, I'm very fortunate that now with the grace of Bhagwan Buddha, I am serving as Governor of Bihar, the land where Lord Buddha received enlightenment at this place in Bodh Gaya, which has become center of devotion for innumerable people all over the world. There is so much literature for our guidance, for our benefit, but someone has written somewhere that if we sum up the message of Buddha, then we can express it in one line. Buddha was keen to know the cause of dukkha, the pain, the suffering, and how to overcome it. And someone has written that he found and he told us that if there is no craving, there is no suffering. अगर हम अपनी इच्छाओं, अपनी काम भावनाओं पर नियंत्रण पालें, तो फिर हमें दुखों से मुक्ति मिल सकती है। और आज की ये सभा, this congregation reminds me of a beautiful verse in Sanskrit which says, Machita madgat pirana bodhiyanta parasparam kathayantascha mam nityam tushyanti cha ramanti cha. Here is congregation of people who have come with great sincerity, pure heart to pay respect to a guide who showed us how to live our lives. Matchitta, their hearts are directed towards the Lord. Madgat Pirana, their senses are totally directed towards the Lord, and they keep reminding each other of the message of the Lord.
they recite to each other the story of the Lord. And they enjoy it, they love it, and they are satisfied with the recitation of the name of the Lord. Instead of going into the we have world over, we have very rich literature. In this short time I can't cover all those aspects, but I will take help of two small anecdotes from the life of the Lord to show how He wanted us to conduct our lives. Once Lord Buddha was going, he had received some invitation, he was going to visit a village. On the way, there was another village, and the people of that village were very hostile to him. They started abusing him, reviling him, saying bad words to him. He was very peaceful, silently he listened to every abuse. And then he said, if you have completed whatever you wanted to say, then can I proceed to the village where people are waiting for me? Then these villagers said, but you have not responded to our abuses. What kind of man you are? Lord Buddha replied to them, if you wanted a response to me, you have come late. If you wanted a response from me, you should have come 10 years before. Now I am different. If you throw a burning wood into a river, the moment it touches the water, the fire is extinguished. I have learned the lesson that I will not allow anybody to manipulate my life. Nobody else can set my agenda. I have become like a river through enlightenment. एक गांव से वो जा रहे थे, रास्ते में जो गांव पड़ता था उन्होंने गालियां दी, बहुत बुरा भला कहा। भगवान ने कहा कह चुके जो कहना चाहते थे। उन्होंने कहा लेकिन तुमने तो कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि जवाब लेना था तो 10 साल पहले आते, अब मैं बिल्कुल भिन्न हूं। अब बुद्धा है, एनलाइटनमेंट। अब मैं नदी की तरह हो गया हूं कि जहां अगर जलती हुई कोई चीज तुम फेंको तो वो पानी को छूने के बाद जलती हुई चीज बुझ जाती है। अब मैं दूसरों को, अब ये संभव नहीं है कि दूसरे ये तय कर सकें कि मैं क्या करूंगा। मुझे जो करना है वो मैं खुद निश्चय करूंगा। एक दूसरी जगह भगवान ने कहा, खूब गालियां खाने के बाद कहा कि अगर तुम्हारे घर कोई मेहमान आए और उसे तुम कुछ उपहार देना चाहो, तोहफा देना चाहो, और अगर वो लेने से इनकार कर दे तो वो तोहफा किसका है? उस आदमी ने कहा देने वाले का। उन्होंने कहा तुमने जो कुछ मुझे दिया है मैं उसे लेने से इनकार करता हूं। Somebody abused him and he asked him, if you receive a guest at your house and you give him some gift and that man refuses to take the gift, to whom that gift belongs? The man said, it belongs to the giver. He said, likewise, I refuse to take what you have given me. और भारत की हमने यहाँ बात अभी
भंते बोल रहे थे, उन्होंने कहा, हमारे सरदार साहब के भी मैंने भाषण सुना, भारतीय प्रज्ञा क्या है? भारतीय प्रज्ञा है हम नाम के झगड़े में नहीं पड़ते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, यद यद विभूति मत सत्तवम श्रीमद ऊर्जितम एवावा तत्तद एवा अवगच्छा त्वम माम तेजोम शसंभवम। Wherever you see extraordinary beauty, extraordinary talent, extraordinary power, energy, see the divine in it. और भी कहा गया है, I was born in a Muslim family. I do not compromise my faith when I bow before Lord Buddha, when I go to visit a temple, when I go to visit a church. This is our Indian heritage. And what is the Indian heritage? Akashat patitam toyam yatha gacchati sagaram. Sarvadeva namaskara keshavam pirti gacchati. These names are not really. Buddha is not a name. Buddha is a state of enlightenment. जिसने प्रज्ञा प्राप्त कर ली, जिसे जहां दूसरी जो प्रज्ञा की परंपरा है उसमें कहें आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, बुद्धिस्ट परंपरा में कहें कि जहां आत्मा इतनी शक्तिशाली हो गई कि वो परमात्मा बन गई। और भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है, अनक्षरस्या धर्मस्या श्रुति का देशना चाहता। ये जो दिस इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस. This is not a doctrine, this is not a ritual, this is not a custom. Attainment of pragya is an experience. ये अनुभव का मामला है. अब अनुभवावसानमेवा विद्या फलम. ये अनुभव आप इसको महसूस किताब पढ़ने से नहीं आता. तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस मामले में केवल अनुभव है. श्रुति का देशना चाहता. It does not come through sermons. It does not come through reading the books. It comes through tapasya. It comes through striving. And I am reminded of a Persian couplet. बना में ऊ क्या नाम न दारत, बहर नाम के ख्वानी सरबरारत. We bow before divinity. We bow before that supreme power. And as Bhagwan Buddha has said, no name can be given to it. No book can give you that knowledge. No sermon can give you that experience. It all depends on your personal striving. I consider myself so fortunate that I am sitting here in the company of Venerable Somdek Sangraja of Thailand and Venerable Upasika, first home of Thailand. And I would like to compliment the commissioner of this division, the district magistrate, the superintendent of police, and all officials for helping in conducting
this program so beautifully and so well. Again, my pranam to all of you, and thank you very much for taking all the pain and difficulties which you must have surmounted while traveling to this place. If you have experienced any inconvenience here, I apologize to you, but we have done, our officers have done whatever best they could do, and if you let us know your experiences in future, we shall try to improve whatever we have done this year. Loka samasta sukhino bhavantu. Dhanyavad. Jai Hind. Sadhu, sadhu, sadhu. Presentation of mementos to our chief guest, His Excellency, the Governor of Bihar, Sri Arif Muhammad Khan, by Dr. Tyagarajan SMIS, District Magistrate cum Chairman of the Bodh Gaya Temple Management Committee. ขอเดินไปนิดเดียว Thank you. Concluding this 2569 Buddha Purnima celebrations organized by the Bodh Gaya Temple Management Committee, I wish to propose the vote of thanks on behalf of the Secretary, Dr. Mahasweta Maharati ji. As we conclude this sacred ceremony on behalf of Bodh Gaya Temple Management Committee, I express our deepest gratitude to His Excellency, the Governor of Bihar, for gracing this auspicious occasion as the chief guest. Your presence has elevated the dignity of the celebration and reaffirmed the compassion and self-awakening. My heartfelt thanks to the venerable Sangha members from various traditions who led the prayers with great devotion, reminding us of the spiritual unity that binds us across nations and cultures. And I especially wish to thank the most venerable Somdek from Thailand for joining us here on this auspicious occasion. I thank the Magadh Division Commissioner, Dr. A.N. Safina, the Chairman cum District Magistrate Gaya, Dr. Tyagarajan SMIG Magadh Range, Mr. Chandranil Singh, the Senior Superintendent of Police, Mr. Anand Kumar for their kind cooperation. I also thank all the representatives of the International Buddhist Committee and all other distinguished present. คนหลายหมื่นแจกทานรอบเลยนะคะยิ่งใหญ่มาก
Kospon Vachirat Manpeng บาสิกาทศ memento on behalf of the Bodh Gaya Temple Management Committee. แม่ แม่เย้โอเค ให้แม่ไปงี้เดี๋ยวโอเค มองอะไรมองทางก็แล้ววันนี้จะไปฉันมะม่วงเนี่ยจะเป็นแบบสุกเพราะนับแล้วเต็มไรเลยแต่ว่าเป็นมะม่วงดิบแต่ใส่ไก่ พี่อ้อจ๋าคุณอย่างสูงเลยเอากระเป๋าเราสาธุ สาธุ สาธุค่ะ เลขยอมนี้นะยอมมาเลยยอม สาธุ โอ้โอ้ สาธุ भोजन वहाँ ग्रहण करेंगे और स्पेशल बर्तन इत्यादि इधर उधर ना फेंकेंगे ताकि करने में दिक्कत होท่านเดียนันคะไปที่โรงทานเลยใช่ไหมป้าไปเลยเหรอไปออฟฟิศเอารองเท้าไปเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปทางไหนไปทางนี้ सभी सभी व्यक्ति की इससे निवेदन है कृपया काल चक्र मैदान में भोजन दान होगा आप लोग सभी काल चक्र मैदान में जाएंगे ให้เจอกันเดี๋ยวปิ้นข้างบนนะ व्यवस्था की गई है เขาปิ้นข้างบน उपासक उपासक उपासिकाएं भी काल चक्र मैदान में जाएंगे जहाँ पर किसी को बोलेโอเค โอเค हरिंदर जी मोबाइल वही हरिंदर जी को दे दिए एक आदमी साथ है अलग ही बोला आपकी बोला रखे रहिए ना राजा बढ़िया बढ़िया ओके 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 खोल दे खोल दो या ถ่ายรูปค่ะสวยสวยถ่ายรูปครับถ่ายรูปกำลังใจ
अरे पहले खिंचाओ ना कौन आधा घंटा लगेगा माँ